Honorable Chief Guest, Dr. Ramesh Pokhriyal, Minister of Education, India. Guests of honor, Shri Manoj Ahuja, IAS, Chairman CBSE, and His Excellency Shri Manu Mahavar, Ambassador of India to the Sultanate of Oman. Dr. Baby Sam Sangwal, Chairman, Board of Directors of Indian Schools in Oman. Members of the Board of Directors, Indian Schools in the Sultanate of Oman. Mr. Ajay Kumar Pillai, President, Indian School Muscat Management Committee. Presidents and members of the school management committees from the 21 Indian schools in Oman. Dignitaries, principals, teachers, staff and students of Indian schools in the Sultanate of Oman. Good morning and welcome to AVENIR 2020, a comprehensive career guidance program initiated by the Board of Directors of Indian Schools to empower students to confidently navigate their future. Career talks by high-profile professionals from different domains. Internationally acclaimed motivational speakers. Success stories of illustrious entrepreneurs. Insights into developing soft skills to give finesse to one's disposition and interpersonal relations. And above all, presentations by more than 60 reputed universities worldwide make AVENIR the most sought after, with a massive participation of nearly 20,000 students, their parents and teachers from 21 Indian schools spread across the Sultanate of Oman. This year, Indian School Muscat is proud to be the torchbearer of this mega event, and we are indeed honored to welcome you all to AVENIR 2020. A warm welcome to one and all to witness, benefit, and be future ready. God shapes the world by prayers. No prayers go unanswered when we lift our hands to seek education, wisdom, and skills. May I request the gathering to join us for the prayer song to receive the Almighty's blessings, to make our endeavors triumphant. Heartfelt prayer is undoubtedly answered with blessings. Mr. Ajay Kumar Pillai donned the mantle of the President of Indian School Muscat Management Committee in 2018, and since then, a member on the Board of Directors, Indian Schools in the Sultanate of Oman. He has contributed to countless system-driven educational initiatives, school events, and has laid focus on the academic and professional needs of students and staff alike. A guest in the house is always a sign of blessing. Let's welcome one and all who bring in good cheer this morning. And to do the honors, may I request
Mr. Ajay Kumar Pillai, to deliver the welcome address. Over to you, sir. The 21st century is an era of knowledge. If poverty is to be abolished in this century, it can be abolished only through knowledge. The words of wisdom from our great Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. Honorable Chief Guest, Dr. Ramesh Pokhriyal ji, Minister of Education, Government of India. Guest of Honor, Sri Manoj Ahuja ji, Chairman CBSE. His Excellency, Sri Manu Mahavar ji, Ambassador of India to the Sultanate of Oman. Dr. Baby Sam Samuel, Chairman, Board of Directors of Indian Schools in Oman. Esteemed members of Board of Directors of Indian Schools, respected presidents and members of School Management Committee, Principal Dr. Rajiv Kumar Chauhan, principals of all Indian schools in Oman, dignitaries and all our dear valued guests, sponsors, most respected teachers, loving children and parents. Very good morning and a warm welcome to AVENIR 2020. AVENIR 2020 is designed to inspire young minds and to give them insights into the world of learning. Choosing a dream, their dream careers and honing their skills to become the individuals who will take on the world and make it a better place. We are honored to have the presence of our esteemed Chief Guest, Dr. Ramesh Pokhriyal ji, Minister of Education, Government of India, to inaugurate AVENIR 2020, the most sought-after event keenly participated by the children. On behalf of the Fraternity of Indian Schools in Oman, I deem it my privilege to welcome you, sir, to this august forum. Sir, we are blessed to have a great poet authoring 75 books for this inaugural function. We are privileged to have Sri Manoj Ahuja ji, Chairman CBSE, with us for this momentous occasion. Your presence this morning will be a great motivation for the staff and students of Indian schools in Oman. It is a grand moment to have with us His Excellency Sri Manu Mahavar ji, Ambassador of India to the Sultanate of Oman, who renders relentless support and guidance in all our educational endeavors. We warmly welcome Dr. Baby Sam Samuel, Chairman, Board of Directors of Indian Schools in Oman, and all esteemed members of the board for this inauguration ceremony. I also extend a cordial welcome to the board team headed by Senior Principal and Education Advisor, Mr. M.P. Vinoba, and Assistant Education Advisor, Dr. Alex. I extend a hearty welcome to Dr. Satish Nambia, Chairman, Indian Social Club, for his gracious presence in this event. The Indian School Fraternity extends a heartiest welcome to all our major sponsors, Steadico, gold sponsors Vellore Institute of Technology, NITE, and Thakur Institute, and silver sponsors Dallas Baptist University and Middle East College, and of course our media partner, the Arabian Stories, and all other sponsoring institutions. I extend a warm welcome to all the representatives of the sponsors. My heartiest welcome to all the Vice Chancellors, Pro-Vice Chancellors of universities, career guidance experts who have consented to dedicate the time for us. A cordial welcome to all the respected members of ISM School Management Committee, specifically our academic chair and convener, Mr. Shamir, who have been working round the clock to make AVENIR 2020 a grand success. I also extend a warm welcome to the presidents of the school management committees and committee members. I extend a warm welcome to Principal Dr. Rajiv Kumar Chauhan, who is our greatest strength and support for all the programs we undertake. Also, I extend a warm welcome to Senior Vice Principal Saji S. Nair, Vice Principals, Mr. Escalin Gonsalves and Mr. Aklari Sajindran, who were spearheading this event with all the other Vice Principals and entire teaching fraternity of ISM, working relentlessly for many weeks for this AVENIR 2020. I extend a heartiest welcome to the principals, vice principals, teachers of the 21 Indian schools of Oman who share our vision in building dreams and bringing the best of all our students. I extend a warm welcome to our valued guests and parents. Your presence here today shows your enthusiasm in shaping the future of our children. A grand welcome to the student community for whom this event is mainly organized.
Dear children members, you can't just sit and wait for the people to give you that golden dream. You need to get up and make it happen for yourself. We can only offer, but the choice is yours. Let me conclude with a quote of our Prime Minister Sri Narendra Modi. Once we decide we have to do something, we can go miles ahead. Dear students, please ignite your dreams and passions and start your journey. Thank you. Thank you for the very warm welcome, sir. Success results when preparation meets opportunity. So explore every opportunity. Bring your passion and career together. Seize this moment. Determine where you want to go and equip yourself as we sail you through the highlights of the event. Dear aspirants, start the preparation for the right career year itself. Ladies and gentlemen, presenting glimpses of AVENIR 2020. Thank you, ISM, for taking the audience through a virtual tour of AVENIR 2020. Dr. Baby Sam Sample is an ardent proponent of social entrepreneurship within the Sultanate of Oman and India. He is an award-winning business consultant specialized in turnaround management, business mentoring, and strategic consultancy. His visionary leadership as a chairman of the board of directors, Indian Schools Oman, has had prolific impact in the Indian schooling system. He leaves no stone unturned to realize the vision of the board in imparting holistic education, and to realize this vision, the board has spearheaded more than 40 initiatives in a short span of 2.5 years, and this has been a historic achievement. Additionally,
Dr. Sam is the Vice Chairman of Knowledge Oman, founding President of Anjapam Charitable Trust, a member of the Industrial Advisory Board, Higher Education Institutes in Oman, and a member Standing Committee Academics, National Council for Teacher Education, Government of India. Dr. Baby Sam Samuel is the recipient of numerous national and international awards for his significant contributions in the educational, social, and business domains. May I request Dr. Baby Sam Samuel to deliver his introductory message. Sir. Thank you, ma'am. It is said, no one can build you the bridge on which you and only you must cross the river of life. But we, as schools and alma maters, can surely provide our students with the resources for it, the wood, the concrete, and the steel. Welcome to AVENIR 2020, the source material to build the grandest, largest, strongest bridge there ever is. Dr. Ramesh Pokhriyal, Honorable Minister of Education, Government of India, Sri Manoj Ahuja IAS, Chairman CBSE, His Excellency Sri Manu Mahava, the Ambassador of India to the Sultanate of Oman, the President of the School Management Committee, Indian School Muscat, Mr. Ajay Kumar Pillai, Educational Advisor and Senior Principal, Mr. M.P. Vinoba, my colleagues on the board, former chairpersons of the Indian School Board, members of the School Management Committee of ISM, Dr. Rajiv Kumar Chauhan, the Principal of Indian School Muscat, representatives from participating universities and esteemed speakers at AVENIR 2020, presidents and members of the various school management committees, principals, staff, students and parents of 21 Indian schools across the Sultanate of Oman. A very warm welcome to all our dignitaries, to the beautiful land of Oman, and to the Indian schools in Oman. Honorable Minister, Dr. Nishank, it was indeed an honor for the Indian diaspora in general and the fraternity of Indian schools in particular to have you grace AVENIR 2020. We thank you for accepting our invitation despite your busy schedule. We take great privilege and pride to congratulate you on being conferred with the prestigious literary honor, the International Vathayan Summit Award in London tomorrow for your outstanding contribution to literature. We also look forward to welcoming you to Oman once the situation becomes normal, and it would be our privilege to honor you for your literary contribution to the world on behalf of the Board of Directors, Indian Schools in Oman. Are you seeking success? If so, what is success? It is not for me or the world to answer for you. Success is and has to be a personal definition, with thousands of pinnacles to choose from and thousands of paths to reach the summit, with new summits and new paths formed every day, every year. It is up to each of us to identify and define our version and our definition of this word. In a world of rapid transformation, until the beginning of this year, it was technological advances like artificial intelligence, automation, and the fourth industrial revolution that were predicted as accelerators of change. But a local epidemic, which soon became a global pandemic, has become the biggest disruptor of the century, completely upending established norms and triggering radical changes in the way we work, learn, and live. COVID-19 has shined a spotlight on many antiquated processes and has forced countries, organizations, and individuals to take unprecedented steps towards replacing this with more efficient and effective means. We, the Indian schools, have had our own paradigm shift in the teaching and learning processes. From minimal digitalization, we have accelerated our adoption of the disruption and the new normal to ensure academic continuity, having now successfully completed
9 months of online classes. In a year underlined by uncertainties and unpredictability, one thing is certain: learning is forever, for lifelong. And we can never know enough, can never learn enough too. AVENIR, as a comprehensive career and educational fest, is a platform to understand the immediate changes ahead and the possibilities of the future, and to plan and prepare for the uncertainties in the ways we can. AVENIR is also a fest, a festival where knowledge is celebrated, where discovering the self, finding inspiration, guidance, motivation is a collective joy. All the more so this year, in the 3rd edition of AVENIR, as we present a 9-day-long mega event, making the best of the digitally connected world now. AVENIR 2020, however, is an effort not just to overcome the current disruption, but also to exploit the disruption by laying the ground for new thinking. This year, now, is the best time to let go of the old and the inefficient and welcome the new and innovative. To exist is to change. To change is to mature. To mature is to go on creating oneself endlessly, says Henry Bergson. As a board of 21 Indian schools in Oman, our vision is to equip each of our children with the knowledge, skills, and well-being to create themselves in the identities that they wish to carve for themselves. To enable our children to find their purpose and calling in life and participate meaningfully in a world as a global citizen. AVENIR is an earnest step in this direction, one among the 40+ initiatives launched by the board in the last 2.5 years as part of a multi-pronged approach in ensuring holistic education. This multidimensional approach for child-centric 360-degree education means academic balance with co-curricular and extracurricular competence. It means a focus on overall growth and well-being. And many initiatives have been driven on these lines, including the ISO VLE, the virtual learning platform, tele-tutoring, around-the-clock counseling service, Here For You, Let's Talk, possibly one of its kind in the world as far as base education goes. All introduced 2 years before it became the need of the hour. Platforms that promote love for learning, like the Science, Technology and Innovation, Indian School Quiz, and the Entrepreneurship Club. Initiatives like Young Communitarians of the Indian Schools that promote social development. Very soon, we shall be launching the Happiness Curriculum, a new supplementary social-emotional learning curriculum aiming to address the well-being and happiness of our children through emotional literacy. Even amidst the pandemic, the focus on extracurricular growth has not been lost. We just had launched the Indian School Talent Fest yesterday, and we have successfully completed the Indian School Quiz last month. Let me conclude. Dear children, when you look back across your timelines, you can see how much potential for change you have within you. Your capacity for revision, for change, and for growth is infinite. This is as true for now as for the future. AVENIR offers you a telescopic view of the landscape ahead to enable you to define your success, pick your summit, and start your journey. All the best. Thank you. Thank you for your very inspiring words, sir. We will definitely treasure your words of wisdom. It's a great privilege to have the gracious presence of His Excellency Shri Manu Mahavar, Ambassador of India to the Sultanate of Oman. The Indian diaspora in Oman is blessed to have an able leader whose focus has always been their well-being. The COVID-19 pandemic never ceased his philanthropic spirit.
Every situation and sector is well handled, be it education, finance, healthcare, emergency travel, food supplies, and a lot more. His Excellency has touched lives by giving unstinted support towards the reunion of children with their parents. He made special arrangements for people who found themselves facing uncertainty in the face of this pandemic. The list is endless, and these noble deeds have been highly appreciated. His active involvement with the community and expansion of India-Oman bilateral relationships post-COVID-19 era under Vision 2040 highlights his proficiency as an able leader. May I have the honor of inviting His Excellency to address the gathering. Namaskar. Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, Honorable Minister of Education of India, Shri Manoj Ahuja, Chairman CBSE, Chairman and members of Board of Directors of Indian Schools in Oman, dignitaries, President and members of school management committees, principals, teachers, and dear students. I'm really delighted to join all of you for the inaugural session of AVENIR 2020. AVENIR is a unique initiative of the Indian schools in Oman to help and guide the students in choosing their career path. I had the privilege of attending the inaugural session in 2018, and in just 3 years, this event has become a flagship event in the calendar of Indian schools in Oman, to which the students eagerly look forward. We are meeting today in the middle of the pandemic situation. In the last 8 months, COVID has disrupted our way of life. Nonetheless, Indian schools in Oman have been able to adapt swiftly and ensure that there were no disruptions in the education. I would like to compliment the entire team of Indian school system for rising to the occasion and ensuring that the future of over 45,000 Indian students in 21 schools is not impacted. The embassy also worked closely with the Board of Directors and Omani Ministry of Education in this period. Every disruption creates new opportunities. Every cloud has a silver lining. COVID is also one such disruption which has forced us to look for new ways of doing things. This event is taking place virtually, and it has allowed us to connect to a much wider range of speakers and educational institutions. I would like to congratulate and compliment the Indian School Muscat for putting together this mega event spread over 9 days. And I would also like to take this opportunity to congratulate the school for 2 of its faculty members getting the prestigious CBSE award for teachers and principals. We are really honored to have the presence of Honorable Minister of Education of India, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank. Under his leadership, the new National Education Policy 2020 has been unveiled, which seeks to comprehensively reform the Indian education system. This new policy is a result of extensive consultations and has been very positively received by all quarters. I'm sure that Dr. Nishank's inaugural address and the series of interactions from luminaries in diverse fields that have been scheduled over the next 9 days will greatly help students identify the correct career path for themselves. COVID has also demonstrated to the world the importance of being a human-centric society and a resilient economy. Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India has embarked on a mission to become self-reliant. Our journey to become Atmanirbhar or self-reliant will open new opportunities, particularly for the youth. I encourage all the young students to closely follow the transformational developments that are taking place in India, as all of you in the future will be playing a role in shaping the new India. And India, in the words of Prime Minister Modi,
that is modern and competitive, yet caring and compassionate. A country where basic needs of all our citizens will be met. A country that will become the global hub for technology and innovation. A country that seeks development and prosperity of not only its own citizens, but of the entire world. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. Together, with mutual trust, we shall prosper. That is our motto. I would like to take this opportunity to thank the Government of Oman and the Ministry of Education of Oman in particular for their constant support. Just 2 days back, Oman has celebrated its 50th National Day. Under the wise leadership of late His Majesty Sultan Qaboos bin Said, India-Oman relations have also developed and achieved great heights in these 50 years. And we pay our deep tributes to him. We are confident that our relations will continue to grow and prosper during the reign of His Majesty Sultan Haitham bin Tariq. On behalf of the Indian community in Oman, I would like to extend best wishes to His Majesty Sultan Haitham bin Tariq and the government of Oman and thank them for their support to the Indian community in general and the Indian school system in particular. Let me conclude by thanking the Indian School Muscat for inviting me to this event, and I wish you all a very successful and productive AVENIR 2020. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your words of appreciation to all the Indian schools for rising up to the situation and to the Indian School Muscat's CBSE Best Teacher Award recipients. We are encouraged by your inspiring words, Your Excellency. AVENIR holds promise for every student, irrespective of their potentialities or circumstances, and gives wings to every aspiration. We present before you a contemporary act, a subtle portrayal of the myriads of opportunities waiting to be tapped to guide our students to mold their future. AVENIR 2020, your future is in your hands. Fire and ice, light and darkness, education, ignorance. The right to education ensures compulsory schooling. However, have we procured the right information on higher education? I have always been a low scorer because my passion is different. They say that I have no future. Is this really the end of my journey? Despite being the first in my class, my opportunities are stunted because of my financial status. My parents say that it is very difficult to get scholarships. I am desperate to know how to choose the path I truly want. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere
I am hopeless. I am in the midst of darkness. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. I will rescue you. Grades nor wealth define your future. If you are unsure of your future, never condemn the dark. Instead, light a lamp of hope and find your calling. Be future ready. That was indeed a beautiful portrayal of faith, hope, and optimism. The optimist sees the opportunity in every difficulty. When major processes were delayed due to the coronavirus outbreak, this sanguine leader had taken up a major challenge of how to complete the annual board examination process of classes 10 and 12, including the declaration of the results before the university admission started. The optimist is none other than Shri Manoj Ahuja, Chairman, Central Board of Secondary Education and Chairperson of the Central Board of Secondary Examination. Shri Manoj Ahuja, one of the senior IAS officers of Odisha cadre, was earlier working as Special Director, Lal Bahadur Shastri, National Academy of Administration, Department of Personnel and Training. Having numerous training modules and research papers to his credit, the chairman is credited with extensive experience and professionalism. It is a proud moment to have such an inspiring personality with us this morning. May I request Shri Manoj Ahuja, Chairman, Central Board of Secondary Education, to share his thoughts with us. Thank you for giving me an invitation to address this August gathering. Honorable Minister of Education, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, His Excellency Shri Munu Mahavar, Ambassador of India to the Sultanate of Oman, Dr. Baby Sam Samuel, Chairman, Board of Directors, Indian Schools in Sultanate of Oman, Shri Ajay Kumar J. Pillai, President, School Management Committee, Shri MP Vinoba, distinguished speakers, principals, teachers, and dear students, I would like to congratulate the management of Indian Schools, Muscat, for organizing the Career Guidance Program, AVENIR 2020, which will enable students to make informed educational and career choices. As all of you are aware and has been mentioned by the earlier speakers, in this country, a new education policy was announced after a span of nearly 34 years.
under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and active hands-on leadership provided by the Honorable Minister of Education Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, now the country has a progressive 21st century looking education policy which looks at providing equity, inclusive and quality education to all the students in India so that the country can reap the demographic dividend. I must be open and tell you that CBSE is privileged to have Minister of Education who takes active interest in the work of CBSE, and his interest is in ensuring that every last child is able to get the benefits of education to achieve his potential and help in creating a country which is modern and global. As was pointed out, he also ensured that the new education policy was not created at the headquarters, but a wide consultation process at the grassroots level. More than 1.5 lakh or 2 lakh suggestions came in. They were analyzed and went into making a education policy, which perhaps is a document which is owned by everybody. I would also like to mention that His Excellency, the Ambassador of India to Sultanate of Oman, when COVID struck, when we were struggling with the examinations, played a stellar role. In fact, he was proactive, and in fact, he would ring us up and say, these are the problems in that the schools are facing, please sort them out. And I must thank him for the initiative he has taken and look forward to his continued support so that the education in schools in Oman develops and even at a faster rate. I must also compliment the board of directors and members of the Indian schools in Oman. What Dr. Baby Samuel talked about, I think are progressive initiatives, and the new education policy also mentions about that. Holistic education, 360-degree education, providing 21st century skills to students. And I think the process by having schools in Oman, CBSE as an organization also has a lot to learn. And we would keep up this mutually beneficial relationship, which will help CBSE as a board and the schools in Oman. And I look forward to a very constructive and enriching partnership in that regard. I would also like to thank the children who sang a beautiful prayer in the beginning and sought a boon from the Almighty. And they said what they would seek was to become a good human being. I think that is a very beautiful boon to seek and a very powerful statement. And I would request the students, as they are thinking about their future, and then as they would interact with visionaries, global leaders, talk about motivational speakers, people from universities, and they're looking at their career paths, do also look at the fundamental purpose of what you are going to do, what a good human being means, and it will help you in aligning your purpose in life and finding the right career choice for you. Similarly, an excellent dance performance was put up, and I think it says that rather than waiting in a passive manner, you'll have to be active, and this AVENIR does provide you with a major opportunity to look at all these aspects and then decide for yourself. I remember my graduation time when I graduated from school, more than a long time back, 32, 33 years back. I think we never had that opportunity, even though choices were limited, but we never had such an opportunity. And I must compliment the board of directors and management of the Indian schools in Muscat for organizing this. And I believe it was started in 2018, and in 3 years, it has grown up to this magnificent and big scale. And I think it's very necessary because, as was pointed out, the world is changing at a very fast pace. As they say, people who do physics know about for radioactive elements, there is something known as a half-life period. Similarly, the half-life of knowledge is reducing very fast. Earlier, the knowledge you had would have carried you for 20, 30, 40 years. Now the time has come when it has become very difficult to predict what the immediate future would be. With technologies like artificial intelligence, disruptive technologies, there would be some jobs which perhaps would not exist because the mundane, routine kind of thinking jobs would be taken up by these technologies. But there would be newer jobs. And it's very important as students at this juncture, when there is some uncertainty about the future, about the nature of jobs, to align your interests, your passions with the possibilities which would exist.
So I think it's a very, very important event which has been organized. And I would say that the new education policy also mentions about similar things. And we are trying to put into or institutionalize a process where career counseling right from the earliest stages to students as they come out of 12th class is available in an institutional manner on a similar scale as has been organized by the schools in Oman. The new education policy actually has provided the country with an opportunity to become a leader in education globally. And we at CBSE are making attempts in providing our students with critical thinking, 21st century skills like critical thinking, communication, collaboration, and communication, and skills which will be necessary, soft skills, social emotional skills, which was mentioned. And we are focused to achieve it in as short a time as possible. The assessment we have right now, which we are doing through the board exams, we are also trying to bring it at par with, let us say, global accredited assessment standards, so that CBSE certificate of the class 10th and 12th becomes globally recognized. A lot of reforms are going on in that direction. They could take time, but that is the direction we are moving towards changing our pedagogy, where the children are put in the center of learning, rather than thinking in a siloed, subject-wise approach, to thinking in a holistic manner, an interdisciplinary manner, and having scholastic, co-scholastic, extracurricular activities all integrated into the syllabus. Learning is a very natural process for children, and children are inherently curious. And that is the basic assumption on which we are working on the national education policy, to encourage that a child to think, leverage on his curiosity, allow him to be creative, and in that process make him learn, so that the whole process of education becomes a joyful experience for him. It's a road which has to be undertaken. The new education policy has set out the framework for us, and I'm sure with the support of everybody and a collaborative effort, we would achieve these objectives which have been sought out in as short a time as possible. And we would, as I said, look forward. The Honorable Minister's support is forthcoming, and it's a very conducive environment. And we would look forward in learning from schools in Oman and globally, so that we are able to get it in as short time as possible. We have a large number of students in Oman, and when they graduate, they do need certain formalities. We have put in systems for e-apostilling, even the transcripts and credentials, we will make it online. We've also put all the transcripts and certificates in DigiLockers. And since students abroad were facing a problem because they could not access it through mobile and an OTP system, we also provided a facility that they could access their documents through a facial recognition system. And any issues which the students are facing, CBSE would be very forthcoming, and we would like to resolve them immediately. At the end, I would thank everybody, especially the organizers, for giving me this opportunity to address such an august gathering, and a large number of students and the principals. And I also want to compliment them for organizing a very needed institutional intervention, which is necessary for the students at this stage, especially at a time when we have been stuck by this COVID pandemic, which disrupted education. So this is very necessary that the students are able to put their thoughts together, gather and talk to experts and leaders who can provide them with soft skills, the resilience, the motivation, the inspiration, and information and knowledge about what their future can be. And I'm sure it will help all the students who would be attending this function. And I would like to wish everybody all the best and wish AVENIR 2020 a resounding success. Thank you very much. That was an informative message from Shri Manoj Ahuja, Chairman CBSE. Thank you for your words of appreciation to all the stakeholders of the Indian schooling system. Your appreciation to all the students who have presented beautiful and meaningful presentations today definitely would have touched them, sir. Thank you once again for such an edifying and affirmative message, sir.
Today, we are exceptionally privileged to have with us a great personality who serves our nation with passion. A renowned Indian politician who took charge as a Minister of Human Resource Development in May 2019. Currently serving as the Minister of Education, representing the Haridwar Parliamentary Constituency of Uttarakhand in the 17th Lok Sabha. Sir had served as the 5th Chief Minister of Uttarakhand from 2009 to 2011 and was also member of the 16th Lok Sabha and the chairperson Committee on Government Assurances. A man of letters for the people, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank has written novels, stories, and poems. Since 1983, when Sir's first book was published, there has been no turning back. The book was unveiled by our former president, late Dr. Shankar Dayal Sharma, and the books that followed were launched by eminent personalities. President Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, former Prime Minister Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee, and former President Shri Pranab Mukherjee. Dr. Nishank has authored 75 books that have been translated into many Indian and foreign languages. More than 15 countries have honored him. One of his works was adapted into the Garhwali film Major Nirala. Honorable Union Minister can enrich us not only with the policies and programs of the government, but also with his creative concepts of literature, which would definitely enable us sprouting men of letters. More than 25 of his literary works are subjects of research for students of PhD and D.Litt. With his great oratory skills, he has always mesmerized the Indian Parliament and the subcontinent too. Our country is constantly benefiting from such an honorable education minister who is working towards world-class education. We take great pride to announce that Sir is being conferred with the prestigious literary honor, the International Vatayan Summit Award for his outstanding contribution to literature tomorrow. Hearty congratulations, sir. A personality of such a high stature who has dedicated his life for the nation inspires us with his simplicity and humility. May I take the honor of inviting Dr. Ramesh Pokhriyal, Honorable Minister of Education, to deliver the inaugural address. नमस्कार। भारतीय विद्यालयों में अवेनिर के 30वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, मुझे खुशी है और मुझे उल्लास भी है कि भविष्य के प्रति चिंतित प्रबंधन और अध्यापक दोनों इस दिशा में लगातार 3 वर्षों से ये महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को, प्रबंधन को, अध्यापक गण को। इस अवसर पर हमारे CBSE के यशस्वी चेयरमैन मनोज आहूजा, जिनके मार्गदर्शन में भारत की नई शिक्षा नीति को CBSE बोर्ड के माध्यम से उसको नीचे तक पहुंचाया जाएगा। बहुत सारे परिवर्तनों के साथ जो नई शिक्षा नीति आई है भारत की, उसके क्रियान्वयन की बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। हमारे इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं भारत के यशस्वी राजदूत श्री मनु महावर जी, और जिनके बारे में मैं आज सुबह ही जब मनोज जी से चर्चा कर रहा था तो मेरे को बताया कि कोविड के दौरान अभूतपूर्व काम हमारे महावर जी ने किया। मैं आपको बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि ऐसे संकट के समय में हमारे तो भारत की संस्कृति ये है कि हम सब मिल कर के
कैसे एक दूसरे का दुख और सुख बांट करके और आगे बढ़ते हैं। मुझे खुशी हुई जब मनोज जी ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया और समय पर परीक्षाएं भी करवाई, प्रबंधन और सब शासन प्रशासन का बेहतर समन्वय भी किया और हर कदम पर आपने हमारे विद्यार्थियों को, हमारे अभिभावकों को वहाँ पर मदद की है, हमारे प्रबंधन को मदद की है। मैं आगे भी अपेक्षा करता हूँ कि आपके सानिध्य में ये मेरे जो विद्यालय हैं ये बहुत प्रगति करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर बेबी सैमुअल जो विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और निदेशक हैं, जितना मैं डॉक्टर बेबी के बारे में जान पाया हूँ मुझे खुशी होती है। बहुत अकलुषित मन के, प्रखर विचारों से ओतप्रोत और समर्पित व्यक्तित्व के धनी। और जब मुझे ये पता चलता है कि रात और दिन शिक्षा के प्रति खप करके वहाँ पर काम कर रहे हैं और 15 स्कूलों को वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उस ग्रुप को आगे बढ़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं तो जब राजेश ने मुझे बताया कि केरल जैसी जगह में भी आप उतनी दूर से रहते हुए गरीब और जिन लोगों को ज़रूरतें हैं उनका अलग से आप प्रयास करते हैं, उनको मदद करते हैं, वहाँ पर मैच चलाते हैं, तो मुझे खुशी होती है। और मैं समझ सकता हूँ कि जब किसी लीडर का किसी टीम का लीडर जब अच्छा होता है तो टीम स्वतः ही बहुत अच्छी होती है। विजनरी टीम लीडर होता है तो वो विजन नीचे तक जाता है और वो परिणाम देता है। तो आप स्वतः ही बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं और आम लोगों के लिए और गरीबों के लिए ज़रूरतमंद के लिए आप किचन भी वहाँ पर चलाते हैं। और मुझे मेरे के लिए खुशी का है कि ऐसे ही मन शिक्षा से जुड़े होने चाहिए, तभी हम वो जो बच्चे को हम जो संस्कार देना चाहते हैं, जो हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आगे बढ़ेगा, वो एक योद्धा की तरह आगे आएगा। मुझे खुशी है कि वहाँ पर इस विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अजय कुमार पिल्ले जी, जिनका बहुत अच्छा अभी उन्होंने अपने स्कूल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से चर्चा रखी है, और MP बिनोबा जी जो वरिष्ठ प्रधानाचार्य हैं, और डॉक्टर राजीव कुमार चौहान जो इस प्रबंधन समिति के सदस्य और मेजबान इस विद्यालय के प्राचार्य हैं। मैं अभी सभी आपके जितने भी प्रबंधक गण में हैं, समिति के निदेशक गण हैं, सदस्य गण हैं, अध्यापक, प्राचार्य, उप प्राचार्य, सभी अध्यापक गण और हजारों जो मेरे छात्र जुड़े हैं और उनके अभिभावक जो आज हमसे जुड़े हुए हैं, और सारे ओमान की जनता, क्योंकि मुझे लगता है न केवल छात्र जुड़े हैं बल्कि इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है कि जरूर जो CBSE से नहीं भी जुड़े हुए होंगे वो भी आपके इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहते हैं, क्योंकि आपने उच्च स्तरीय करियर गाइडेंस सम्मेलन जैसा बहुत महत्वपूर्ण विषय को 3 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। 30वां संस्करण आपका ये है। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा मन है, और ये तो पूंजी है हमारी। हमारा जो बच्चा है वो हमारी पूंजी है, किसी भी समाज की पूंजी है, किसी भी राष्ट्र की पूंजी है, पूरी दुनिया की पूंजी है। इसका मन, इसका संस्कार, इसकी दृष्टि, इसका दृष्टिकोण, इसका विजन क्या है, किस लाइन पर आगे चलना है, जो आज दुनिया की तमाम समस्याएं खड़ी हैं, यदि हम इस बच्चे को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप में पूरी दुनिया की सारी समस्याओं का भी समाधान निकलेगा। और फिर मैं समझता हूँ तो भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। हमारे यहाँ हमेशा एक उक्ति रही है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये जो पूरी वसुधा है, ये जो पूरा संसार है, मेरा कुटुंब है, परिवार है। और जब परिवार का सदस्य कभी सुख और दुख में होता है तो पूरा परिवार खड़ा हो जाता है। और हमने जब प्रार्थना करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की
प्रार्थना करते हैं कि नहीं, धरती पर यदि ये पूरा परिवार मेरा है तो धरती पर कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहना चाहिए। जब तक वो दुखी रहेगा तब तक मुझे सुख का अनुभव नहीं हो सकता, मैं खुश नहीं हो सकता। यदि मुझे खुश रहना है, सुखी होना है, तो मुझे दूसरों को पहले खुशी देनी है। ये हमारी परंपरा, ये हमारा विजन। और मुझे खुशी है कि अभी जब आपकी छात्राओं ने अभी वंदना की, प्रार्थना की, तो कितनी अच्छी प्रार्थना आपने कही है। उस प्रार्थना में ताकत है। वो प्रार्थना यदि ये कहे बच्चों की, जब देखे दुख दूजों का तो छलक पड़े अपने नैना, आंखों में आंसू छलक आए दूसरों के दुख, ये संवेदना है। यही आदमी जिंदा है, आदमी तो यही जिंदा है, यही जीवन है। जिसके मन में संवेदना नहीं है। आपने बहुत अच्छा, भी मैं देख रहा था कि आपने कहा कि हमको जीवन देने वाले देना, हमको एक ये वरदान देना कि हम दीन और दुखियों का सहारा बन सके। बहुत अच्छी आपकी प्रार्थना में जब बच्चा सुबह ये शुरू करेगा इस बात को कि हाँ, मुझको ये वरदान चाहिए कि मैं दूसरों के दुख दर्द को दूर कर सकूं, तो स्वाभाविक ही है, दूसरों का दुख और दर्द वही दूर कर सकता है जिसमें ताकत होगी। दूसरों के दुख और दर्द वही दूर कर सकता है जिसमें विजन होगा। दूसरों के दुख और दर्द वही दूर कर सकता है जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण ज्ञान विज्ञान अनुसंधान में शिखर को चूम रहा होगा। कमजोर आदमी कभी किसी की मदद नहीं कर सकता है। कमजोर विचार कभी किसी को आगे बढ़ा नहीं सकता। कमजोर मन कभी कोई ठोस कदम नहीं उठा सकता। कमजोर मन कभी कोई चुनौती भरा काम नहीं कर सकता है। और इसलिए ये जो मन है, ये मन की जीते जीत है, मन के हरे हार। ये जो मन है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस मन को संजोने का काम इस शिक्षा को करना है। वो अकलुषित मन है। ये जो छोटी सी हमारा बच्चा है, जो छोटे से पौधे के रूप में उग रहा है, उभर रहा है, उसको सब कुछ देने की जरूरत है। तभी जो कुछ हम बोएंगे हम उसी को काटेंगे, वही हमारे सामने होगा। अब विचार ये है कि हम क्या दे रहे हैं बच्चे को। सारी दुनिया के लिए यदि हम भारत के लोगों ने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है, तो हम सीमाओं से परे जाकर के फिर विश्व को कुछ देना चाहते हैं, देने की ललक रखते हैं। लेकिन ये चुनौती पहले हमारे सामने है। हम देना क्या चाहते हैं, हम सक्षम हैं कि नहीं है, हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है, हमारा उस सीमा तक का विजन है कि नहीं, उसमें सामर्थ्य है कि नहीं, उतना हमें क्षमता है कि नहीं है। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि आपके जो विद्यालय ओमान में चल रहे हैं, मुझे मालूम है कि हम पीछे 2.5 साल पहले मुझे याद किया था और मैं वहाँ तक पहुँच भी रहा था। मालूम होगा डॉक्टर बेबी जी को, तो लेकिन मुझे मॉरिशस से लौटना पड़ा अचानक, क्योंकि अटल जी की उस बीच उसी समय मृत्यु हुई और मैं ओमान नहीं आ पाया। लेकिन मुझे आज खुशी है और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपने जो वातायन का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान जो उन्होंने घोषणा की है, उसके बारे में जो आपने मेरे प्रति सद्भावना व्यक्त की और यहाँ सम्मान की घोषणा की। ये सम्मान आपका है, आपके बच्चों का है, मेरे भारत का है, मेरे उन विचारों का है जो मनुष्यता के लिए अपने को समर्पित होकर के शिखर तक का प्रयास करना चाहते हैं। ये सब सम्मान में हमेशा उनको अर्पित करता हूँ और विशेष करके मेरे बच्चों को अर्पित करना चाहता हूँ। ज़रूर मैं ओमान आकर के, क्योंकि मुझे अब और ज़्यादा उत्सुकता हुई है कि आप लोग बहुत अच्छा वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं ओमान आकर के भी आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि अवेनिर फ्रांसीसी शब्द है और इसका अर्थ है भविष्य, और उस भविष्य को तराशने और तलाशने के लिए आप आज बहुत सारे विश्वविद्यालयों के साथ आप 1 सप्ताह का ये सम्मेलन करें। मुझे बहुत आनंद आया, मुझे अच्छा लगा, मुझे शुभकामना। मैंने अपने चेयरमैन CBSE को जब मैं सुबह बात कर रहा था और उन्होंने चर्चा की कि इतना सुंदर सर कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर, तो उन्होंने भी मन बना दिया कि जिस तरीके से आपने ये किया, वैसे तो हमारी नई शिक्षा नीति में भी कैरियर काउंसलिंग की बात है, लेकिन अब इसको हम बहुत तेजी से करेंगे। हम प्रदेशों के स्तर पर करेंगे, हम मंडल के स्तर पर करेंगे और उन प्रदेशों में, क्योंकि
हिंदुस्तान तो शिक्षा का जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज है, 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ और 10 लाख से अधिक अध्यापक हैं, और जितनी कुल अमेरिका की जनसंख्या नहीं है उससे भी ज्यादा 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं। यह है हिंदुस्तान। और इसलिए वो हिंदुस्तान को जो कभी विश्वगुरु रहा है, जिसमें पूरी क्षमता है, ताकत है, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में पूरी दुनिया को एक दिशा देने की, एक नया युग परिवर्तन लाने की, और उसी के लिए जो ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई हैं, अद्भुत है, पूरी परिवर्तनकारी है। नए परिवर्तनों के साथ, नए आयामों के साथ हम पूरी तरीके से लाए हैं। और जैसे कि अभी सीबीएसई के चेयरमैन ने कहा और हमारे महावर जी ने भी कहा कि ये व्यापक परिवर्तनों को लेकर आई है। अब हम 10+2 नहीं कर रहे हैं, 5+3+3+4 कर रहे हैं, और उसमें भी हम बच्चे को 3 वर्ष का, क्योंकि विशेषज्ञ ये कहते हैं और वैज्ञानिक का मत है कि वो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के जो बच्चा है वो उसमें बहुत तेजी से उसके मस्तिष्क का विकास होता है, तो हम उस अवसर को भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इसलिए 5 को भी हमने 3+2 में जोड़ा है कि हम शुरू से ही उस बच्चे को लेकर के चलना चाहते हैं, उसकी मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसको कौन सी दिशा चाहिए। इसलिए ये जो शुरू से स्कूली शिक्षा से भी पहले किस तरीके से वो अपने बुनियादी शिक्षा के आधार पर खेल के माध्यम से आगे कैसे बढ़ सकता है, आंगनबाड़ी से ही उसको हम लेना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। और ये अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम शीर्ष शिक्षा में पढ़ाते नहीं, अब हम स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना चाहते हैं। शायद दुनिया का पहला देश होगा हिंदुस्तान जो स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएगा। और क्लास 6 से हम 6वीं से वोकेशनल स्ट्रीम के साथ, इंटर्नशिप के साथ ला रहे हैं। ये जो बस्ता का भार कम हो, उसको ज्ञान ज्यादा हो, तो ये वोकेशनल स्ट्रीम के साथ हम जहाँ शिक्षण है वहाँ शिक्षणेतर खेल कूद से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों से लेकर तमाम गतिविधियां, उसको हमने मशीन नहीं बनाना है, मनुष्य बनाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा जहाँ देश को एक अच्छा नागरिक चाहिए, आज हिंदुस्तान की इस नई शिक्षा नीति को विश्व का महामानव भी चाहिए, जो विश्व के फलक पर अपने को उभार सके, जो हर क्षेत्र में लीडरशिप दे सके। और इसलिए हम उस मानव को तराशने की इस नई शिक्षा नीति जो टोटली भारत केंद्रित होगी, लेकिन ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी में उसके शीर्ष तक जाएगी। और इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है, अब हम बच्चे को जहां 6वीं से उसको वोकेशनल स्ट्रीम के साथ, इंटर्नशिप के साथ उसको अध्ययन कराएंगे, वो स्कूल से निकलते निकलते ऐसा योद्धा के रूप में निकलेगा जब वो किसी के पैरों पर खड़ा ना होकर के उसको स्वतः ही अपने निर्णय लेना होगा कि उसको क्या करना है और किस रूप में आगे बढ़ना है। वो आत्मनिर्भर हो जाएगा स्कूल से निकलते ही, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत की बात की है, नए भारत की बात की है। ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, सुंदर भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, एक भारत हो। क्योंकि एक भारत पूरी विश्व की सुख शांति समृद्धि कहीं ना कहीं भारत से होकर के भी गुजरते हैं, क्योंकि भारत की जो नीतियां हैं, भारत का जो मन है, भारत की जो शिक्षा है, वो विश्व बंधुत्व की है, पूरे विश्व को अपना मानने की है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो नए भारत के निर्माण में जो ये नई शिक्षा नीति एक आधारशिला बना करके आई है। जैसे कि अभी मैं देख रहा था कि हमारे चेयरमैन कह रहे थे जो हमारी नई शिक्षा नीति है, वो नई शिक्षा नीति ये नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, ये इंटरएक्टिव भी है, ये इम्पैक्टफुल भी है,
ये इंक्लूसिव भी है, ये इनोवेटिव भी है और इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर खड़ी है। और ये हम अब अपने बच्चे को प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं देना चाहते, हम उसको 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन कर रहे हैं। वो बच्चा अपना मूल्यांकन भी करेगा, उसका साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा, उसका अध्यापक भी मूल्यांकन करेगा, उसका अभिभावक भी मूल्यांकन करेगा और 360 डिग्री का मूल्यांकन होगा। अब प्रोग्रेस कार्ड देंगे उसको, रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे। अब प्रोग्रेस क्या हो रही है वो प्रोग्रेस कार्ड देंगे। वो स्वतः स्फूर्त आगे बढ़ेगा, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहता है उसको पूरा मैदान खाली है। हम उसकी भाषा में कैसे अभिव्यक्ति को बाहर निकाल सकते हैं और स्कूली शिक्षा से उसकी प्रवृत्ति को किस क्षेत्र में ये और तेजी से आगे बढ़ सकता है और शिखर को चुम सकता है, इसका आंकलन करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ये विश्व के लिए एक ऐसी सुंदर सुकृति है हमारे लिए, जिस पर एक कोरा पन्ना है। इस कोरे पन्ने में हम क्या लिखना चाहते हैं और कितना सुंदर लिखना चाहते हैं, दोनों बातें। ये कोरा पन्ना, डॉक्टर बेबी जी, आप जिन कोरे पन्नों पर लिख रहे हैं, मुझे भरोसा है कि उन पन्नों पर आप इतने सुंदर हस्ताक्षर से वो चीज लिख रहे होंगे जो अमिट होगी। मुझे भरोसा है, जो पूरे न केवल उस छात्र के लिए, न केवल उसके परिवार के लिए, क्योंकि आज उनके परिवार के हजारों लोग मेरे साथ जुड़े हैं आपके माध्यम से। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अभिभावकों को और अध्यापक दोनों। मैं तो एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक से शिक्षा मंत्री तक की यात्रा को अच्छी तरीके से महसूस कर सकता हूँ और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षक और अभिभावक जिस दिन ये दोनों तय कर देंगे और नीति हमारी अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो रही है, जिसको हम नई नीति बना करके लाए हैं। आप देखिए किस तरीके से जिस मनुष्य की कल्पना हमने की है, कैसा होना चाहिए मनुष्य, ये व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ये नर का जो नर के रूप में, जो नारायण के रूप में रहेगा, जो नर और नारायण को हमने कभी नहीं कहा कि ये तो मनुष्य है, हमने तो पत्थरों को भी पूजा है। और इसलिए इस मनुष्य की सेवा, हमारे विवेकानंद जी ने कहा था, नर नारायण है, इसकी सेवा करना है। और इसीलिए मैंने आप दोनों लोगों को अलग से भी बधाई दी, चाहे हमारे महावर जी हैं कि उन्होंने संकट के समय अतिरिक्त रात और दिन खप करके, यही तो मानवता है, यही तो संवेदनाएं है कि अतिरिक्त समय निकाल करके, भाग दौड़ करके, ये नहीं देखा कि रात की 12 बजे कोई फोन आ रहा है, 1 बजे 2 बजे फोन आ रहा है, या मैं क्या करूं, मैं नहीं, अपना एक कदम आगे बढ़ करके और उस मानवता की सेवा के लिए आगे आए हैं। और डॉक्टर बेबी के बारे में सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा है और आपका बहुत योगदान होगा। ये पैसा तो आएगा और जाएगा, लेकिन यदि ये पीढ़ी को संवारने का जो आप काम कर रहे हैं डॉक्टर बेबी जी, ये छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। ये आपकी जो समर्पितता है, ये हमेशा जिंदी रहने वाली समर्पितता है, ये कभी मरेगा नहीं। आदमी तो आता और चला जाता है, कौन किसको सुनता है, जानता है और बाद में याद करता है। याद उसी को करते हैं जो कुछ अच्छा बो करके जाता है। और आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति हमारी बहुत खूबसूरत है। हम दुनिया का सबसे बड़ा विमर्श वाली शिक्षा नीति है। आप सोच सकते हैं 33 करोड़ छात्र छात्राओं से हमने सीधा संवाद किया। 33 करोड़ छात्र छात्र के माता पिता से, यदि 33 करोड़ छात्र छात्र के केवल माँ और पिता को भी देखें तो 99 करोड़ होता है सारा। इनसे हमने परामर्श किया, हमने शिक्षकों से, शिक्षाविदों से, गांव से लेकर के और पार्लियामेंट तक और ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक, हर क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। जैसे व्यापक परामर्श किया हमने, लगातार परामर्श किया। और उसके बाद भी जब इसका मसौदा हमने तैयार किया, उसको भी हमने फिर, जैसे अभी मनोज जी बता रहे थे, कि हमने पब्लिक डोमेन में डाला और पब्लिक डोमेन में डालने के बाद 2.25 लाख से भी अधिक सुझाव आए और हर एक सुझाव पर हमने पूरी तरीके से छानबीन करके 3 सचिवालय स्थापित करके एक सुझाव का विश्लेषण किया। और विश्लेषण करने के बाद हम इस नई शिक्षा नीति को लेकर के आए हैं, जो बहुत खूबसूरत है। न केवल देश में उत्सव का वातावरण है, बल्कि मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि तमाम देशों में अभी लगातार लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं कि हम भी भारत की NEP को चाहते हैं। क्यों नहीं चाहेगा?
जब बच्चे को मैदान खाली मिलेगा, उसके अनुसार करेंगे। उच्च शिक्षा में हमने कहा जो विषय हो, चाहे इस शिक्षा में भी विषयों को लेने की कोई बाध्यता नहीं है, जो विषय वो लो। विज्ञान के साथ आप साहित्य ले सकते, साहित्य के साथ आप कोई दूसरा विषय ले सकते हैं, आप इंजीनियरिंग के साथ आप संगीत ले सकते हैं। किस विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका जो मानस है वो शिखर पर कौन सा विषय लेकर के जाना चाहता है। और इसलिए हमने उच्च शिक्षा में भी कोई बंधन नहीं डाला है, जिस विषय को चाहो आप उस विषय को ले सकते हो। और यदि आपको लगता है, कई बार परिस्थिति वश होता है, बीच में छोड़ करके जाता है बच्चा, बीच में नहीं वो परिस्थितियां होती हैं, तो 2 साल में, मानो 4 वर्ष का कोई कोर्स होता है, 2 साल में छोड़ करके जाना पड़ता है उसको, तो स्थिति ये होती है 2 साल में उसको बेकार हो जाता है, हताशा और निराशा लगती है उसके। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा, अब हमने टोटली चेंज कर दिया है। यदि 1 साल में परिस्थिति छोड़ रहा है तो 1 साल में उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में यदि छूट रहा है उसका तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में छूट रहा है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन यदि 2 साल या 1 साल में छोड़ने के बाद दोबारा वो अपने जीवन को संवारना चाहता है कि नहीं मुझे वहीं से शुरू करना है, तो वो 2 वर्ष या 1 वर्ष उसका खाली नहीं जाएगा। हम क्रेडिट बैंक बनाया है, उसका वो सारा वहीं पर जमा रहेगा, जहां से उसने छोड़ा वो वहीं से आगे शुरू कर सकता है। और इसलिए पूरी की पूरी छूट है, बहुत अच्छी तरीके से छूट है। और शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करके, जो प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में होगा, हम शोध और अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम तकनीकी की दृष्टि से तकनीकी का उपयोग अंतिम छोर के व्यक्ति को करना चाहते हैं। अभी मनोज जो हमारे सीबीएसई के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि अंतिम छोर का बच्चा, क्योंकि अचानक पूरी दुनिया में कोविड की महामारी आई, सब लोग कैद हो गए, किसी को पता नहीं था, ना दुनिया को पता था, ना हमारे देश को पता था, ना बच्चों को पता था। ऐसी परिस्थितियों को अचानक जैसी आई, आप सोच सकते हैं कि 33 करोड़ छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पर रातों रात लाना पड़े, आप सोच सकते हैं। लेकिन मेरे इस शिक्षा विभाग ने किया, ये हिंदुस्तान में मोदी जी की अगुवाई में हमने इसको साबित किया। इसलिए ये कहा कि जब चुनौतियां होती हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं चुनौतियों का मुकाबला यदि डट करके होता है तो अवसरों में तब्दील होती हैं। और हमने इन कोविड की महामारियों को अवसरों में तब्दील किया, हमने प्रमाण दिए। हमारे सीबीएसई के ठीक समय पर हमने परीक्षाएं की, ठीक समय पर हमने रिजल्ट दिया, हमने जेईई की परीक्षाएं करवाई, हमने नीट की दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा करवाई। हम लोगों ने फाइनल परीक्षाओं को कराया बिना किसी प्रकार की एक घटना भी अप्रिय नहीं घटी। हिंदुस्तान जैसे 33 करोड़ छात्र छात्राओं को लीड करने वाला देश शिक्षा विभाग, और इसलिए हम ऑनलाइन को हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। और अभी ऑनलाइन 1000 विश्वविद्यालयों में जो टॉप NIRF के टॉप 100 विश्वविद्यालय हैं, उनको हम ऑनलाइन शिक्षा का पूरा मान्यता दे रहे हैं। हम विश्व के शिखर के 100 विश्वविद्यालयों को हम हिंदुस्तान की धरती पर आमंत्रित कर रहे हैं, और हमारे जो शीर्ष संस्थान हैं उनको हम दुनिया तक ले जाने के लिए बात कर रहे हैं कि वो दुनिया तक जाएं, और जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले हम प्रधानमंत्री जी और हम IIT दिल्ली के एक सेमिनार में जुड़े हुए थे, जो दीक्षांत समारोह था। तो IIT के डायरेक्टर ने कहा कि बहुत सारे देशों से उनके पास लगातार प्रस्ताव आ रहे हैं कि हम स्थान भी देंगे, अवस्थापना भी देंगे, केवल आप शुरू करिए। अब बहुत तेजी से हिंदुस्तान की जो शिक्षा का फलक है वो तेजी से बढ़ रहा है। अब यदि सीबीएसई को ही देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी संस्था होगी ये सीबीएसई, जिसको हर व्यक्ति को गौरव महसूस होता है कि हाँ, उसका बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है। तो ये सीबीएसई ने अपने को तराश करके और उस स्थान पर रखा है। और इसलिए भारत की जो ये नई शिक्षा नीति है बहुत अद्भुत आई है, ये भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से संवारेगी। और जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी फोरम का भी हम गठन कर रहे हैं कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को भी, बच्चे को भी तकनीकी का ज्ञान हो और वो उसको लेकर के उस शिखर तक भी पहुंचे। इसलिए
नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का भी हम गठन कर रहे हैं। उधर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इधर नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इन दोनों का जिस समय गठन होकर के तेजी से बढ़ेगा, उस दिन बिल्कुल नए आयाम के साथ पूरी दुनिया में नए कलेवर के साथ हिंदुस्तान की शिक्षा नीति पूरी छाएगी। मुझे ओमान सरकार को भी बहुत बधाई देनी है और महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक जी को भी धन्यवाद देना है, उनका आभार प्रकट करना है कि हाँ, उन्होंने हमारे स्कूलों को समय समय पर वो उनका अच्छा सहयोग मिलता है। जो अभी हमारे राजदूत साहब ने कहा है कि उनका पूरी तरीके से हमको मदद मिलती है, तो मुझे धन्यवाद देना है, क्योंकि ये ओमान के लिए एक ऐसी निधि है, ओमान के विकास के लिए, क्योंकि हम लोग तो एक मातृभूमि, एक कर्म भूमि होती है, मातृभूमि के साथ साथ कर्म भूमि को हम ऊपर उठाने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। और आपके बच्चे ओमान के विकास में बहुत आगे बढ़ेंगे, उनमें आत्मविश्वास है, उनमें प्रखरता है, उनमें सजगता है और उनमें ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की तमाम संभावनाएं और जिसको आप आगे विकसित करना चाह रहे हैं, और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको भी। और मुझे लगता है कि अभी जो 2 अध्यापक सीबीएसई ने जो पुरस्कृत किए हैं, उन 2 लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। ये जो सीबीएसई अवार्ड एस्कलीन गेंसाल्वेस और वेंकटेशन कार्तिकेयन, इन दोनों को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मुझे भरोसा है कि अपना स्थान बना करके और अध्यापक भी इसी तरीके से आगे आएंगे और आप एक नया उदाहरण ओमान से प्रस्तुत करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। स्वाभाविक ये है कि जो आगे 21वीं सदी है वो ज्ञान की सदी है, और ज्ञान नहीं तो अंधकार है। ज्ञान को कहते हैं प्रकाश और अज्ञान को कहते हैं अंधकार। और हमने तमसो मा ज्योतिर्गमय की बात की है। हम हमेशा अंधेरे को चीर करके प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, वो जीवन है। जैसे प्रकृति और संस्कृति है, जब आदमी अपनी प्रकृति के अनुरूप नहीं चलता तो वो बोलते हैं ये इसकी क्या हो गया इसको, क्योंकि उसकी प्रकृति यदि चुप रहने की और बहुत बोल रहा है तो लगता है कुछ गड़बड़ है। तो या वो बहुत बोलता है और आज बहुत शांत है, तो तभी लोगों को लगता है ये तो अपनी प्रकृति के आज कुछ गड़बड़ जरूर है। तो प्रकृति के विपरीत जब जब होता है तब तब प्रकृति वैसे भी प्रकृति के साथ सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। और जो हमारा पर्यावरण और प्रकृति का है उसका भी बहुत हम ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध विकृति होती है और विकृति विनाश का कारण होती है। प्रकृति के अनुरूप संस्कृति होती है और संस्कृति विकास का कारण होती है, सृजन का काम करती है। और इस मूलभूत आधार को हमको बच्चे के मन के अंदर रखना पड़ेगा। इसलिए हमने पिछली बार सीबीएसई ने एक छात्र एक वृक्ष का अभियान लिया था कि एक छात्र एक पेड़ को जरूर लगाएगा और हर छात्र अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष को लगाएगा। मैं डॉक्टर बेबी और उनकी पूरी टीम को ये अनुरोध करूंगा कि इस संस्कार को आगे बढ़ाइए कि जिस दिन किसी बच्चे का जन्मदिन होता है वो एक अपना पेड़ लगा करके सेल्फी करके आपके उसमें भेजे, और दूसरे वर्ष उसका जब जन्मदिन आना होता है तो पहले वाला पेड़ का सेल्फी करके दूसरे वाले पेड़ को दिखा करके कि ये भी है। लगातार उसकी जिंदगी में एक एक पेड़ और उसका संरक्षण भी वो करेगा। कितना परिवर्तन आएगा, कितना खुशी होगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। मैंने एक छोटे से बच्चे से टेलीफोन पर बात की जब ये अभियान चल रहा था। मेरे केंद्रीय विद्यालय का बच्चा था, तो मैंने कहा कि आपने ये किया? हाँ, मैं अपने टूटी फूटी तोतली बोली में बोलता है कि मैं अपने पेड़ को रोज मिल के आता हूँ और जब मैं स्कूल से जाता हूँ फिर उसको मिलता हूँ। तो पूछा वो कैसे? बहुत खुश है। मैं ना उसको खुश रखता हूँ, मैं उसको पानी देता हूँ, उसको ये देता हूँ। ये संस्कार उसको मालूम है कि वो खुश रहेगा, कहता वो खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगा। वो दुखी होगा तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। ये है थीम। इस बच्चे के मन के अंदर कैसे डाल सकते हैं? वो कोरा है, उस कोरे मन के अंदर अकलुषित है। जो आप डालेंगे वही आधार खड़ा होगा। मुझे भरोसा है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है ये भारत केंद्रित होगी, ये जीवन मूल्य पर आधारित होगी। पीछे के समय यूनेस्को की डीजी जब मुझे मिलने के लिए आई थी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर निशंक क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को
आदमी सह नहीं पा रहा है, तमाम प्रकार की जो है छोटी छोटी बातों में लोग उलझ रहे हैं, बच्चे के मन के अंदर भी जो है ये कुछ हिंसक जैसी प्रवृत्ति आ रही है। तो मैंने उनको कहा कि आपको मालूम है, कभी अध्ययन किया, ये बोलने की बातें नहीं है, ये संस्कार की बातें हैं। हमने बच्चों को बचपन से सिखाया गया है, उनके जीवन मूल्यों के आधार पर उसको खड़ा किया है कि नहीं। हमारे यहाँ संस्कृति है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उतना ही ग्रहण करो जितना आपको जरूरत है। संचय करना, ये संचय करने के बाद और दूसरों पर वो करना, ये इससे नहीं समस्याएं पैदा की हैं। यदि वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है और उस परिवार के लिए करना चाहता है, करो, दौड़ो। वो जितना बड़ा परिवार होगा उतनी बड़ी अवस्थापनाएं भी चलती जाती हैं, ये स्वतः ही होता है। तो हमने उसके संस्कारों को तो कहीं किया ही नहीं। हम तो मशीन बना रहे हैं, हम तो पैकेज की दौड़ करवा रहे हैं, पेटेंट की दौड़ की बजाय उसको पैकेज की दौड़ करवा रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा सा मानस को बदलना पड़ेगा। हमको अच्छा इंसान खड़ा करना पहले, और उसके बाद ही वो वैज्ञानिक भी होगा, प्रशासक भी होगा, राजनीतिक भी होगा, उद्योगपति भी होगा। वो अच्छा इंसान जहां भी होगा वो अच्छा ही करेगा। अच्छा इंसान जिधर जाएगा वो उसकी अच्छा ही खुशबू बिखरेगी। और इसलिए मुझे भरोसा है कि आप ये करेंगे, और जो ये शिक्षा नीति आ रही है, ये बहुत विश्व के सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में ये उभर करके आई है। ऐसा रिफॉर्म दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि ज्ञान की ये महाशक्ति के रूप में 21वीं सदी है, हम भरपूर तरीके से इसका उपयोग करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। और हमने जो इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो बात की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केवल हमको प्रतिभाओं को हमने देखना नहीं है, हमने ढूंढना भी है, हमने उसका विकास भी करना है और उसका विस्तार भी करना है। ये हमारी हमको कंटेंट भी चाहिए और पेटेंट भी चाहिए। और इसलिए इन दोनों के रूप में कैसे करके हम बच्चों को आगे ले जा सकते हैं, इसकी हमारी चिंता है। और मुझे भरोसा है कि इस माहौल को हम, जो आज हिंदुस्तान में एक अद्भुत सकारात्मक माहौल बना है, ये निश्चित रूप में भारत विश्व का एक ऐसा गंतव्य बनेगा, केंद्र बनेगा, और भारत के संस्थान और भारत की शिक्षा पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छे परिवेश के रूप में खड़ी होगी। आज भी हम दुनिया के लगभग 127 विश्वविद्यालयों के साथ स्पार्क के तहत अनुसंधान कर रहे हैं। हमने स्टडी इन इंडिया अभी शुरू किया है। पूरी दुनिया के लोग बहुत तेजी से मेरे देश में पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। अभी हमारे आसियान देशों के 1000 से भी अधिक बच्चे हमारे IIT में अनुसंधान करने के लिए आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब आसियान देशों के सम्मेलन में घोषणा की थी, उसका हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। खुश हैं, पूरी दुनिया आना चाहती है, क्योंकि हम अपनी शिक्षा को और मजबूती के साथ खड़ा करना चाहते हैं। और जो ये भारत, जिसमें एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा, सारी दुनिया के लोगों ने जहाँ से अपने को बढ़ाया है, उठाया है, और जहाँ तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते थे, आज फिर अब वक्त आ गया है कि वो विश्व गुरु भारत के रूप में फिर मेरा देश खड़ा होगा, और हम पूरे विश्व को अपने परिवार के रूप में आगे बढ़ाएंगे। उस परिवार के साथ सुख और दुख में आगे चलेंगे। और जैसे कि अभी महावर जी ने कहा कि सबसे बड़ी ताकत है हमारी कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक सूत्र दिया, सबका साथ, सब हम साथ रहेंगे, सबका विकास होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए अंतिम छोर तक, चाहे वो शिक्षा का विकास हो, विभिन्न क्षेत्रों का विकास हो, और सबका विश्वास, हम सबके विश्वास को लेकर के कोई हमसे दूर न रहे, किसी को शंका आशंका की कोई दूर तक कोई गुंजाइश न रहे। ये है हमारा सूत्र। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा सूत्र दिया जो सारे विश्व के फलक पर भारत को उठाता है, उभारता है, और पूरी दुनिया के साथ सहयोगात्मक रूप में खड़ा दिखता है। तो मैं एक बार ऐसे अवसर पर, जबकि आप यहाँ पर कर रहे हैं, और ओमान को 18 नवंबर को जो ओमान का राष्ट्रीय दिवस था, मैं अपनी ओर से भी ओमान वासियों को इस अवसर पर बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनको शुभकामना देना चाहता हूँ। और जो आपकी आज जो उच्च स्तरीय करियर
गाइडेंस सम्मेलन हो रहा है। इसकी मैं विधिवत शुभारंभ की भी घोषणा कर रहा हूं और आप सब लोगों का आभार भी प्रकट कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपके अनमोल शब्द और उच्च विचारों ने निस्संदेह ही हमारे मन में घर कर लिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके साथ से हम सभी ऊंचाइयों को पार कर लेंगे। हम सभी को आप पर बहुत गर्व है। धन्यवाद। Let your dreams take flight. Let your hearts ignite. Let your wings open up. It's time to realize your might. Ladies and gentlemen, presenting the AVENIR song. Let AVENIR 2020 show you the path to go.
May AVENIR 2020 be a promising event for each and every one of us. Mr. MP Vinoba is a senior principal and education advisor to the Board of Directors, Indian Schools in the Sultanate of Oman. He had served as a principal of Indian School Ivri for 25 years prior to this appointment. Mr. Vinoba was a recipient of the prestigious CBSE Mentor Award in 2015 and has held positions as CBSE Gulf Council Secretary and Chairman too. To acknowledge everyone who has brought us to this moment of AVENIR 2020, may I request Mr. MP Vinoba, Senior Principal and Education Advisor to the Board of Directors, to propose the vote of thanks. Sir. Honorable Chief Guest, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, Minister of Education, Government of India. Guest of Honor, Sri Manoj Ahuja, IAS, Chairman CBSE, and His Excellency, Sri Manu Mahavar, Ambassador of India to the Sultanate of Oman. Dr. Babysam Samuel, Chairman, Board of Directors of Indian Schools in Oman. Esteemed members of the Board of Directors of Indian Schools, senior officials from CBSE, Mr. Ajay Kumar Pillai, President of the host school, Indian School Muscat, and its managing committee members, presidents and members of the school management committees of various Indian schools, host school principal Dr. Rajiv Kumar Chauhan, principals of various Indian schools in Oman, dignitaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, and my very dear students. A very good morning to you all. Yes, we closed the inaugural ceremony of AVENIR 2020, a magnificent program hosted by Indian School Muscat under the aegis of Board of Directors. I take this opportunity to extend my profound gratitude to His Majesty Sultan Haitham bin Tariq Al Said for his immeasurable benevolence and magnanimity towards the Indian community and its endeavors. The benign presence of the Honorable Minister of Education, Government of India, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, has given the Indian schools an immense privilege to be enlightened with his words of wisdom on this occasion. We are deeply indebted to you, sir, for graciously accepting our invitation amidst your busy schedule. We are truly grateful to you for spending your valuable time and sharing insightful thoughts that would certainly add value for our students in shaping their future. Thank you so much, sir. Indeed, it is our privilege that Sri Manoj Ahuja, IAS, Chairman CBSE, has graced this occasion. The thoughtful experiences that you have shared with us would resonate in the young minds for years to come. Heartfelt thanks to you, sir, for inspiring us with your educational experience. Every eventful initiative of the Indian schools has been consistently supported by the Embassy of India, Muscat, and I take this opportunity to extend my sincere thanks to His Excellency Sri Manu Mahavar, the Ambassador of India to the Sultanate of Oman, for gracing this inaugural ceremony of AVENIR 2020 with his esteemed presence. So thank you very much for inspiring us with your words of wisdom. Thank you very much, sir. Our sincere thanks to all the senior CBSE officials who made it possible to attend the event this morning. Our profound gratitude to Dr. Babysam Samuel, Honorable Chairman, Board of Directors of Indian Schools in Oman, for envisioning AVENIR 2020 and leading from the front to success. It is my privilege to thank the esteemed members of the board for their valuable presence amidst us for this grand inauguration. Thank you, sirs. The price of greatness is responsibility. I wholeheartedly thank the host school, Indian School Muscat, headed by the President, Mr. Ajay Kumar Pillai, and convener, Mr. PTK Shamir of the Management Committee, administered by the Principal, Dr. Rajiv Kumar Chauhan, with his enthusiastic and active team
for their diligence in leading AVENIR 2020 by harnessing an array of exceptionally high-profile resource personnel for the benefit of the students. I owe my gratitude to the presidents, members of the school management committees, principals, and staff of various schools for being a part of this event and scaling it towards success. My deep appreciation to all the dignitaries, benefactors, and well-wishers who have virtually joined the inaugural function from all over the world. Finally, it is my utmost privilege to extend a deep sense of appreciation and thanks to the parent community and our students who have joined us from several locations in Oman with such great interest and enthusiasm. Without your support, an exceptional event of this magnitude through online platform would not be possible. My deep appreciations to all the students who took part in the inaugural ceremony from Indian School Muscat. Thank you, children. AVENIR 2020 has commenced with greatness in knowledge and education. The next few days, it would certainly unfold an enriching learning experience to each one of us. Thank you all once again, and have a great day ahead. Namaste. Thank you for your kind and gracious words, sir. We have reached the culmination of a very solemn and promising event, which marks the commencement of AVENIR 2020. Here we open before you an avenue where your dreams will meet opportunities. Wish you a great day and a great start at AVENIR 2020. Let us get together and witness all the events starting from today, 11 a.m. onwards. Beginning with the first session, Know Unique Careers and the Best Universities by Mr. Jitin Chawla in Meeting Room 1, and presentation by Monash University, Australia in Meeting Room 2.